Alrighty, welcome back, guys. Welcome back to Stock Explorer once again. And today the markets were amazing, I would say. Nifty went on above 24,400, so great closing for Nifty. But today's video is all about another stock which I wanted to discuss before the Diwali comes. It's called SJS Enterprises, and we'll talk about what this company does. And one more thing, it's a very small company, guys. This is a small cap company. So just to let you know, this is not a buy or sell recommendation. This is something which I feel it's a very strong fundamental company, and we should look into it. So keep that in mind, and do not rush to buy any of these company which I'm discussing. Take a deep look, check with your advisor, and then go for it. All right, we'll talk about SGS Enterprises. So this company is into, we'll give you a quick idea क्या करती है ये makes 2D appliques, like ये आपकी गाड़ी के जो सब मीटर्स होते हैं और स्पीडोमीटर्स होते हैं वो सब बनाती है, बाइक्स के, कार्स के, जितने भी आपके लोगोज होते हैं ब्रांड के, आगे के डैशबोर्ड के ग्लासेस होते हैं, जितने भी स्टिकर्स होते हैं गाड़ी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो बनाती है। आपकी वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव्स के जो पैनल्स होते हैं वो बनाती है। क्रोम प्लेटिंग करती है गाड़ियों के लिए, और व्हील कैप्स भी बनाती है। तो ये उस प्रोडक्ट में डील करती है। ओके, सो एक क्विक आइडिया मिल गया आपको व्हाट डज दे डू। कंपनीज जो उनके साथ डील करती हैं एंड द कस्टमर्स, इट्स अ बिग लिस्ट। इंडियन कंपनीज भी हैं, अमेरिकन कंपनीज भी हैं, यूरोपियंस भी हैं, एशियन भी हैं। लुक एट द ब्रांड्स, लाइक ऑल द फेमस लीड ब्रांड्स आर वर्किंग विद देम. So we'll talk about all of it, and we'll go to the presentation quickly. Perfect. So current CEO of the company is Mr. Sanjay Thapar with 40 years of experience, guys. 40 guys, as you can see, automotive industry mein. Previously, he worked with Ashok Minda Group and Minda Valco Security Systems. So Minda is another big company. We'll talk about that company some other time. आपने Mindas के lights देखी होंगी, horns देखे होंगे, आते हैं, बहुत famous company है. And he has done his Bachelor of Degree in Science from Delhi College of Engineering. The CFO, the Chief Financial Officer, is Mr. Mahendra Naredi with 25 years of experience. Again, he has worked with Wipro and Minda Corp. So अब देखिए जो कंपनी के सीईओ एंड मैनेजमेंट है उसी के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो व्हाट्स द नेक्स्ट कंपनी दे गोना मेक इट हैपन. So अभी current company they are managing this company Minda Corp के आप stocks price and company का growth plan देखेंगे, then you will understand that why I'm talking about SJS and why there is a potential as well, because great management is there, plus product innovation is also happening, and expansion plan is happening on a great place. So we'll talk about that as well. So these are the people who are handling the companies in great hands. Strategic market position, operates in high value added aesthetic market across multiple consumer oriented and end industry. Wide product range इनके, stickers, logos, 3D lux, aluminum badges, in mold decoratives, optical plastic and lens mask covers for diverse appliances applications. बहुत सारी चीज़ों के लिए बनाते हैं ये. Partner, co-creator and supplier of choice to several leading OEMs in the automotive and consumer durable industry. ऑटोमोटिव और कंज्यूमर ड्यूरेबल में मेजॉरिटी कंपनीज के लिए लोग बनाते हैं. चार फैसिलिटीज हैं अभी फिलहाल, सप्लाइंग ग्लोबली फ्रॉम इट्स फैसिलिटी इन बैंगलोर, टू इन पुणे एंड वन एट मानेसर गुरुग्राम, स्प्रेड अक्रॉस 4 लाख स्क्वायर फीट. बिग फैसिलिटीज, बट चार ही हैं. मोर ग्रोथ प्लान्स आर हैपनिंग as time comes. Currently, revenue they are doing is 6,278 million revenue as of financial 24. EBITDA मार्जिन देखिए कंपनी का 25.2% का EBITDA मार्जिन है, स्ट्रॉन्ग मार्जिन. EBITDA मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड amortization. So उसके पहले 25% का EBITDA margin, which is amazing for a small company of 3,500 crore. Workforce 2,300 people are working. They have product being served in 22 countries worldwide. फोर प्रोडक्शन फैसिलिटीज एज अभी डिस्कस्ड, बैंगलोर में एक, पुणे में दो, मानसर में एक. 180 प्लस कस्टमर लोकेशन, 169 मिलियन पार्ट्स आर सप्लाइड ऑलरेडी, 7,000 स्टॉक कीपिंग यूनिट, SKUs 7,000 तरीके की प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसकी यूनिट रखते हैं. विल क्विकली चेक द हाईलाइट्स नाउ. SGS innovative
business outperformed two-wheeler plus passenger vehicle industry by almost two times, 1.8 times. So in one quarter, they have outgrown two times in two-wheelers and passenger vehicle. अभी आप देख ही रहे थे recently from past 2-3 years there has been a huge demand for products in two-wheelers, actually two-wheelers for the commercial purpose and also passenger vehicles. Right after pandemic, everybody wanted to opt for cars और पर्सनल व्हीकल्स, सो वहाँ से ग्रोथ आई है इनको, एंड जैसे जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बढ़ेगी ऑटोमेटिकली एसजीएस के लिए भी एक फ़ायदा रहेगा. एंड नॉट ओनली दैट, दे आर ऑल्सो डीलिंग इनटू कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. तो जैसे आपके एसीज, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव्स, दिवाली पे सब जो लोग खरीदेंगे, द प्रोडक्ट्स विल गो फ्रॉम एसजीएस. जो उसके मेन बटन्स हैं, मेन उसके पैनल्स हैं, वो एसजीएस ही कंपनी सबको देती है. Highest ever quarterly revenues 1,927 million, a growth of 18%, growth driven by passenger vehicle, consumer segment as well as exports. Exports business grew by 54.7%. तो एक्सपोर्ट करते करते इनका 54% तो एक्सपोर्ट ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस में. तो साल दर साल 50% से ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, जिस स्टैगरिंग ग्रोथ फॉर अ स्मॉल कंपनी based in just four locations in India. EBITDA margin improved 370 basis point, 370 basis point से EBITDA margin बढ़ा इनका to 26.6%. Amazing EBITDA margin, guys. Margin expansion was driven by high sales and enhanced operational efficiencies. फ्री कैश फ्लोज जो इनके आए हैं हाफ ईयर 25 में 663 मिलियन के आए हैं, एंड क्वार्टर टू में 258 मिलियन के आए हैं. बेसिकली रीपेड अ टर्म लोन ऑफ 300 मिलियन. इन्होंने अपना एक टर्म लोन रीपे किया है एंड मेड द कंपनी डेट फ्री. They also won a long-term export business from global OEM supply in North America, Latin America and Europe. ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है. देयर इज अ केपेक्स फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन एट एक्सोटेक. एक्सोटेक के अंदर केपेक्स के लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन के कमेंस अ न्यू प्लांट टारगेटिंग टू कमीशन बाय फाइनेंशियल ईयर 26. अब एक्सोटेक क्या है भाई? आई वाज जस्ट सर्चिंग एक्सोटेक क्या है. So Exotech deals into making all kinds of chrome and grills for all the brands. अब महिंद्रा के लिए, स्कॉर्पियो के लिए बनाते हैं ये. This is the platform Exotech Plastics. Now it's 90% owned by SJS now. So इसके अंदर भी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं. एसजीएस के साथ एक्सोटेक भी यही सेम चीज़ बना रहा है. एक्सयूवी 700, ऑक्टेविया, स्कॉर्पियो के लिए बैजेस, ये क्रोम के बैज महिंद्रा स्कोडा के लिए. इवन फॉर टीवीएस जुपिटर्स यू विल सी उसके बैच बना रहा है, ग्रिल बना रहा है. फिएट के लिए ये जितने भी कवर्स देख रहे हैं आप टायर्स के, वो बना रहा है. जितने भी क्रोम एसेसरीज हैं लाइट के आसपास, ये सब वो बना रहा है. कार गार्निश, एंड इट्स अ बिग थिंग. अगर आप कार लेते हैं, द मोमेंट यू बाय इट, द सेकंड थिंग विच अ पर्सन हुएवर बायज अ कार इज टू कॉस्मेटिक चेंजेस लाने के लिए गाड़ी में, या नहीं भी अगर नहीं लिए तो पुरानी गाड़ी में कॉस्मेटिक चेंजेस. एवरीबडी नीड्स अ चेंज एंड बेटर लाइफ के लिए, तो बेटर चीज़ें दिखने के लिए वो सब करते हैं. सो ये एक्सोटेक का काम है. एज आई शोड यू, डील्स इन क्रोम. नाउ इट्स एसजीएस कंपनी बेस्ड आउट ऑफ महाराष्ट्र. तो आपको पता चल गया एक्सोटेक भी क्या करती है. ओके, विल गो बैक. Now they also did a 3 megawatt solar power supply to drive operational efficiency, but that is something with which is related with the growth of the company itself. Now ये ब्लू वाला जो है ये इंडस्ट्री है एंड ग्रीन वाला एसजीएस का कंट्रीब्यूशन है. सो इंडस्ट्री प्रोडक्शन वॉल्यूम में ब्लू वाला 12.5% टू व्हीलर्स में जितना भी हो रहा है, उसमें से 13% एसजीएस का कंट्रीब्यूशन है. पैसेंजर व्हीकल में ग्रोथ देखिए आप क्वार्टर टू में फाइनेंशियल 25 में. लास्ट में 12% थी, इस बार 13%. पैसेंजर व्हीकल में आप देखिए इट वाज 0.7% which has increased to 22%. Drastic growth, almost two times growth in this in the industry. Same thing for two wheeler plus passenger vehicle. ग्रेट ग्रोथ 18% की इनकी ग्रोथ रही है एचजीएस के कंट्रीब्यूशन में. सेम थिंग फॉर टू व्हीलर्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 25.
थोड़ा स्लो रहा 12.5% टू व्हीलर में, बट पैसेंजर व्हीकल जितनी भी कार्स उसमें देखिए आप 51% का ग्रोथ है। मोर देन 2 टाइम्स ग्रोथ हुआ ओवरऑल कार्स एंड बाइक को मिला के। सो मेन सेगमेंट जो प्रोडक्ट ड्राइवर रहा है वो है इनका पैसेंजर व्हीकल। Growth story continues with brands like Mahindra, TVS, Hyundai, Visteon, Honda, Royal Enfield, Dixon. Dixon is a big brand which is into TV panels and all kind of electric manufacturing equipment manufacturing company, but it's a contract manufacturers. तो बड़े बड़े brands के लिए बनाते हैं, Samsung हो गया, OnePlus हो गया, and all the other brands as well. IFB is into washing machine, तो उसके भी panels बनाते हैं, BMW तक के interiors, Yamaha, Bajaj. So these are the big brands. Stellantis, what is Stellantis? Stellantis is a company based in US. कौन कौन से brands बनाते हैं आप देखिए, they make Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Maserati, Jeep, Opel, रैम, जितने भी बड़े ब्रांड हैं ना यूएस के मेन कार्स के, उनके इंटीरियर्स बनाती है ये कंपनी। तो इनका बाहर भी प्रोडक्ट जाता है, सो इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ इंटरनेशनल कस्टमर्स एंड Stellantis is one biggest one of them. The other customer he has, they have is this Liber which is into earth moving. तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपके एक्सकवेटर्स, जितने भी माइन के अंदर जाते हैं बड़े वाले ट्रक्स, लोडर्स, डंपर्स, उसके इंटीरियर्स बनाते हैं लोग। उसके बाहर के लोगोस, बाहर के स्टिकर्स, जितना भी क्रोम एसेसरीज का काम होता है इन सब कंपनीज में, जितने भी प्रोडक्ट में इनके होता है वो बनाती हैं। तो दिस इज द अदर ब्रांड विच दे डील इन। सो great companies which they deal in, as I showed you, the earth mover company, Liber here, and Stellantis. These were the international brands along with Visteon. The other ones are local, which we all have seen here. Okay, perfect. Now we'll go down. They've also been recognized for few other things like Kaizen, which is basically a Japanese term of making sure that there is least amount of error in a company. So they have won 2 gold medal in that. They've also won the best financial reporting company and won third prize in ACM Kaizen contest. So which is means it's a company which is based on zero, no trial and error, zero errors as a company. दे आर डूइंग लॉट ऑफ environmentally good environmental social governments के अंदर भी काफ़ी काम कर रहे हैं. So they have started supporting 200 women with vocational training, distributed 111 school bags. So the company, not only they're trying to develop themselves in the company standpoint, but they're also doing uh, environmentally and socially भी अपना contribution कर रहे हैं. 74% renewable energy यूज़ कर रहे हैं, 14.3 hours average training दे रहे हैं per employee को. They're also promoting 12.5% females to manager position. तो managers के लिए female को opportunities दे रहे हैं लोग. And also, if you'll see, they've started putting the emphasis on all right. So we'll see about their financial performance now. So Q2 में last year they did 1,632. Q1 में they did 1,886, and this quarter they did 1,928. So from here to here, what a growth! 18% का growth दिया है year on year from revenue and operation standpoint. EBITDA, which is earning before interest and taxes, they did 37% of growth year on year. पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें 51% का चेंज आया है एंड 3% क्वार्टर एंड क्वार्टर आया है. सो एवरी क्वार्टरली ऑल्सो दे आर इंक्रीजिंग एंड एवरी ईयर ऑल्सो दे आर इंक्रीजिंग. सो कंपनी इज इंक्रीजिंग ऑन ऑल स्टैंड ऑफ पॉइंट कि भाई साल दर साल भी बढ़ रही है एंड क्वार्टर भी बढ़ रही है. लॉन्ग टर्म डेब्ट आपको याद है, इनिशियली उन्होंने एक 300 करोड़ का टर्म लोन लिया था which they have paid off, so they are almost debt free in 2025. No more debts they have, only some short term debt which is around 102 crores. Rest इन्होंने सारा पे कर दिया है एंड नाउ दे आर कमिंग इनटू प्रॉफिट्स. सो नेट कैश भी आ रहा है, 390 करोड़ के आसपास इनका नेट कैश आ रहा है, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लॉस में था. So strong cash flow is coming, consistent ROC and ROE they are maintaining, and they are delivering strong financial performance, creating long-term shareholder values, which is why we have looked into the stock as well.
Return on capital employed so far is 25 here, as you can see, but they have done better 33, which went down to 20. Now it's on 24%. Return on equity has been staggering around 15, 16, but now it's increased to 19% this year. Uh, CFO in case 792 के रहे हैं cash flows, and future cash flows around 663 crore, which is fine. Okay. Now we'll go down to check what is there in the chart as well. Okay. Or first, before we go there, let me just quickly show you where their revenues are coming from. So SGS का 54% पैसा तो उनके खुद की कंपनी से आ रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है उनकी खुद की कंपनी से आ रहा है, SGS जो खुद है। बाकी जिन्होंने एक्सोटेक जो मैंने आपको दिखाया क्रोम बनाती है, वहाँ से 24% आता है। और ये WPI से आता है 20%। So before we move down, ये भी जानना जरूरी, what is WPI? WPI is another company which is called Walter Pack India. क्या करती है कंपनी? I will show you quickly. वहाँ से 20% आता है इनका। Walter Pack India is another company which deals in making same thing, interior, chrome, all the panels, stickers for all these big brand. Let me show you. Tesla, Mercedes, Audi, Ferrari, Jaguar. Like these are all the aspirational brands जो हम लोग ने जरूर अपनी लाइफ में देखे होंगे, या कुछ ना कुछ ओन करना चाहते हैं उनमें से। इवन टीयर 2 ब्रांड्स भी ये लोग करते हैं, लाइक कॉन्टिनेंटल, मदरसन सुमी एंड अदर प्लास्टिक क्यूमेंस, और ये जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनके लिए भी काम करती है। तो वॉल्टर पैक इंडिया इज अनदर कंपनी विच दे एक्वायर्ड रिसेंटली, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। एंड इसके कई सारे ऑफिस हैं, स्पेन में है, इंडिया में है, मैक्सिको में है। सो नाउ वी नो व्हाट इज WPI एज वेल, क्योंकि वहाँ से उनका आता है 20% शेयर आता है। परफेक्ट, नाउ एवरीबडी नोज व्हाट इज WPI। 20% वहाँ से, 24% एक्सोटेक्स से जहाँ से क्रोम आता है, एंड 54% SGS से आता है। रेवेन्यू बाय एंड सेगमेंट, जो अपना मेन रेवेन्यू आता है वो है पैसेंजर व्हीकल से, जो गाड़ियाँ होती हैं। 35% आता है उनका टू व्हीलर से, जो जितनी बाइक्स होती हैं। और 18% अभी आता है उनका कंज्यूमर प्रोडक्ट, AC, वॉशिंग मशीन और फ्रिज के जितने भी पैनल्स होते हैं। 5% अदर प्रोडक्ट से भी आता है उनका। रेवेन्यू जोग्राफी 91% इंडिया से आ रहा है, 8.5% बाहर से आ रहा है। सो ठीक है, नॉट दैट वेल डाइवर्सिफाइड, क्योंकि सिर्फ 8% ही आता है। दे कैन ग्रो मोर आउटसाइड एज वेल। Okay. Now after acquisition, what happened? Before acquisition, each car manufacturer used to pay around 1,200 to 1,500 rupees per vehicle for this all the chrome thing which they used to give, like illuminated logos, chrome plating, like this window garnish, decals, black sticker, ये सब जो आप देख रहे हैं, इन सब के लिए एक गाड़ी के लिए 1200 से 1500 मिलते थे इनको पहले। बट आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ WPI, जो वॉल्टर पैक कंपनी इन्होंने एक्विज की है, आफ्टर दैट दे हैव स्टार्टेड टू अर्न अराउंड 5000 per vehicle. So right now they are making double the profit before double the revenue before acquisition of WPI. So acquisition किया WPI का, उसका इनके पास रेवेन्यू ज़्यादा आने लग गया। एंड देयर आर फ्यूचर प्लान्स एज वेल, कि इसके बाद जब वो आगे कंपनी को करेंगे एक्वायर, देन दे विल ग्रो मोर 4 to 6 times. सेम थिंग विद द टू व्हीलर्स एज वेल, जहाँ 300 से 500 रुपये थे, अभी जैसे जैसे एक्विजिशन करते जा रहे हैं, इट विल ग्रो इनटू ट्वाइस थ्राइस प्राइस। एक पैनल जो सैमसंग के लिए एंड अदर्स माइक्रोवेव कंपनीज के लिए लोग बनाते थे, जो टच पैनल्स होते थे, वहाँ 50 to 150 रुपीज़ मिलता था पर प्रोडक्ट लिए। नाउ इट विल गो इनटू 4 times बिकॉज दे have acquired big companies in their sectors as well. So strong organic growth has been happening in the company, and WPS ने 2023 में WPS का acquisition किया, and after that they did Exotech acquisition in 2020, which helped in grow their revenue 2.3 times. So 3 गुना वहाँ से revenue आने लगा. Now we'll quickly check their company's data. कंपनी इज़ अ वेरी स्मॉल कैप कंपनी, 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके कॉम्पिटिटर्स आप देखिए, दे आर वेरी बिग इन देयर फील्ड, एंड SGS इज़ रियली स्मॉल। सुप्रीम इंडस्ट्री देखिए, जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर 55,000 करोड़ की है। एस्ट्रल इज़ द अदर वन, 47,000 करोड़, एंड वेराज SGS इज़ अ स्मॉल कंपनी, बहुत छोटी कंपनी है। ROC ही भी
compared to all the big ones is less, but it's on the verge of growing and capital expenditure. So soon we will be able to see the company making big revenues as well. Okay, now we'll go down and we'll show you the sales and expenses. So कंपनी के सेल्स जो रही है, आप देखिए 2015 में जो सेल्स रही 153 करोड़ की रही, whereas 2024 में it doubled to 363 crores. सेम थिंग विद द एक्सपेंसेस, बिकॉज इनके एक्सपेंसेस भी वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे सेल बढ़ रही है। आप देखिए 110 से 125, 152, 168 एंड देन इट्स स्लोली इंक्रीज टू 258. This year we are expecting the revenues to go above, same thing with the expenses, but the operating margin आप देखिए कांस्टेंट रहे, ऑलमोस्ट 30% के पास। 10 साल से 30% के आसपास मार्जिन कमा रही है। ऐसा नहीं है कि पहले they were not making margin, they are still making margin as well, so great thing. And net profit, if you'll see, it has increased 4 times because the volume have increased, they've acquired new companies, with new company comes new customers, so volume is increasing and that's they're making more revenue. 30% का margin है, amazing margin. Now let's quickly see the chart as well. For the P, currently it's on the P of 43. Median P जो इसका रहता है वो around 27 का रहता है. So it's little overvalued, especially because of today. आज ही 10% बढ़ भी गया है. So you can look at the stock a little bit later when the prices come down as well. Okay, we'll quickly show you like how they started. I wanted to show you that as well. So SJS was founded in 1987 by three entrepreneurs with a joint venture with Serigraph. So Serigraph was the first company which they did joint venture with in 2006. So I was just checking what does Serigraph do. It's a US based company. क्या क्या बनाती है? They make lots of products. Not only they make car products, they make plastic products for every brand. Like most of the brands you will see around in US, they make everything. जिलेट के लिए रेजर बनाना, बियर के लिए कार्डबोर्ड के बॉक्सेस बनाना, इवन KFC उन सब के लिए मेन्यू कार्ड्स एंड टेबल कवर्स बनाना, विनाइल्स, जितने भी स्टिकर्स देखते हैं हम लोग वो सब बनाते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में तो हमारी कंपनी भी है SJS, बट दिस कंपनी वाज आल्सो इनटू ऑटोमोटिव इंडस्ट्री फॉर टेस्ला। इट्स बेस्ड आउट ऑफ US, सो वहाँ पे प्रोडक्ट एडवांटेज ये अच्छा है कि दे कैन कैप्चर मोर कंपनीज, बट if since they are manufacturing in US, it must be expensive because labor is expensive. So SGS should do something about this as well. Now we'll quickly go to trading view and see here. Company is growing enormously, and so is the share price. But the share is definitely respecting its moving average, the exponential 20 days moving average, and since long time it hasn't come down and retested level. Currently, the company is testing its all-time high. Actually, I think it's the all-time high today itself. All-time high closing the year उन्होंने आज. So amazing, good news for all the shareholders who are holding SGS. I would recommend them to keep holding. Right now it's not a good time to go into this stock, but we can definitely look back once this level comes, once the stock comes this level down and retest its support here, so we can come and check around 880, 90 levels. But it's a great stock, it's a small company, lot of growth ahead in the company, and price, while valuation wise a little expensive right now, so let the valuation also come down. I explained you all the things which they do, how they make the money out of their products, and how much margin they are making. Look at into this stock, read about it, check new companies which they are acquiring and new companies which are becoming their customers, and keep me posted as well. We'll recheck the stock probably after coming 5 or 6 months. Till then, I'm looking for a target of at least 2000 because personally, in my personal portfolio, I have a holding of SGS. So this is not again a buy and sell recommendation, guys. This is just for everyone to know what this company do. Do your thorough analysis. I hope you like the video, guys, and we'll be seeing you after Diwali now. Thank you and happy Diwali to you all.